Now we will concrete our knowledge that we learned about the issuing of right shares. In this example, we'll see that a company had an authorized share capital of 50,000. Face value is 100 rupees per share. And the capital that it has issued to the public is 30,000. Obviously, 100 is the face value. And now the company has decided, the directors, they have decided in the board that they would be issuing right shares, and that right share would be issued at a premium of 30 rupees per share. And the proportion of that right share is that 2 right shares will be issued for every 15 shares held by the shareholders. अब इसकी अकाउंटिंग करने के लिए यू मस्ट नो कि आपके पास 30,000 इक्विटी शेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी इन इशू हैं. ये कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है, बिकॉज जो लास्ट आपने देखा इसमें कि आपके 50,000 ऑथराइज्ड शेयर्स हैं, बट यू हैड इश्यूड 30,000 शेयर्स. आपने जो प्रोपोर्शन कैलकुलेट करनी है 2/15 की, बिकॉज आपने कहा कि हर 15 के बदले में 2 शेयर आप इशू कर रहे होंगे राइट्स के तौर पे. अब ये प्रोपोर्शन जो अप्लाई करनी है वो आपने 30,000 जो कि इशूड शेयर कैपिटल है उस पर अप्लाई करनी. तो वो इशूड शेयर कैपिटल इज इशूड एंड पेड अप, ऑब्वियसली वो 30,000 है. 2/15 करेंगे तो आपके पास 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं दैट यू आर गोइंग टू इशू नाउ as right shares. उसके against what you would be receiving 130 rupees per share. Yes, that 30 is the premium that you are receiving. तो वो 100 plus 30 आप जब उस पर multiply करेंगे तो you will get 520. This is the total inflow that you would be receiving by issuing these right shares in cash. All right. सो इस अकाउंटिंग को आप यूं देखते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट विद दैट अमाउंट ऑफ 520,000. शेयर कैपिटल, याद रखिएगा शेयर कैपिटल कभी अपनी फेस वैल्यू से कम या ज़्यादा पर क्रेडिट नहीं होता. उसकी फेस वैल्यू जो क्या है एट पार मीन्स इस क्वेश्चन में उसकी 100 पर शेयर है. ओके, तो 100 पर शेयर टाइम्स 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स उसने इशू किए, दैट इज 400,000. और आपका शेयर प्रीमियम जो है दैट इज 120, द बैलेंसिंग फिगर. और इन अ वे यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट दिस बाय मल्टीप्लाइंग 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स with this 30 rupees, the amount of premium that you are receiving upon issuing the rights shares.